Hello and welcome back to my channel. Hello and welcome back to Little Drama Mama. Today we are cooking my most favorite dish, which is Moroccan chicken. Isko banane ke liye we're gonna need a few ingredients, which are not that many ingredients, but we're gonna use 500 grams of boneless chicken, chicken fillets. But to give it a homemade feel, I am going to be cutting my boneless into smaller cubes. I'm gonna quickly chop up and I'm gonna see you in the next shot. Cut into smaller chunks. अब इसको हम करेंगे marinate. इसके अंदर 2 tablespoons of Worcestershire sauce, or however you say it or pronounce it. In that we're gonna add some oregano or oregano. I meant to add more. To that I'm gonna add dried basil. That reaction, salt, and this, look how cute my salt. Acha ji, we're gonna add salt, some salt reaction. I'm not gonna do that. Okay, I'm gonna add a little more salt. 1 tablespoon vinegar. To this we're gonna add in some paprika. अगर आपके पास paprika नहीं है, so you can use regular chili powder that is available at your house, and don't put too much because these dishes do not have a lot of spice to it and they bring out their own flavor. So to this also I'm going to add some apple cider vinegar, but I'm not going to add too much and I'm not going to go too crazy with it. I'm just going to add about half a teaspoon or just a slight dash. And now we're gonna quickly give this a good mix. I've boiled half a cup of water here, and as soon as it hits it's boiling and simmering, I'm gonna add, for half a cup I'm taking 1 teaspoon of hot. I'm gonna use extra virgin olive oil. If you don't have that, you can use regular oil, and I'm going to use this. Why not? Healthy life decisions, you know. I'm trying. Lagta nahi hai. Because to this, I'm going to mix some canola. That's about it. 1-2 teaspoons. Thoda piche hat ke, you start adding your chicken cubes. तो अब इस पॉइंट पे इसका मकसद ये है कि हमें सिर्फ अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर देना है. Once we have achieved that golden brown color, we are going to move on to our next step. We add 1 tablespoon of ginger garlic paste to my frying chicken marination. अच्छा, इसको इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करके हम छोड़ देंगे जब तक वो चिकन हो रही है फ्राई, और इसको आपने देखते रहना है. और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है. Smells so nice right now. The whole kitchen is infused with the herbs flavor, and I just love these herbs. तो हम इसको literally each side पे सिर्फ 4 से 5 मिनट देंगे. 4 से 5 मिनट के बाद we're gonna take it out and let it cool, and we're gonna use the same pan to make our sauce. तो ऐसे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें और कमेंट करके बताएं अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की है या मेरी अभी तक कोई रेसिपी ट्राई की है एंड यू रियली लाइक इट, तो आप ज़रूर बताइएगा. डिश आउट एंड दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं. फिर आप ये देखें कि झटपट तैयार हो गई है.
अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, अब हमने अपना पैन साफ नहीं करना, we're gonna let the flavors stay there as it is। तो इसको हम रख देते हैं साइड पर, यहाँ पर रख देते हैं। अच्छा, अब हमें ज़रूरत है इसमें थोड़ी सी और ऑलिव ऑयल की, बहुत थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दें, वेरी केयरफुली, फिर आपका पैन बहुत हॉट। अच्छा, थोड़ा सा आप अपने गार्लिक को, मैंने रिमेनिंग गार्लिक इसमें डाल दिया है टू गिव इट सम कलर। जैसे इसको कलर मिलेगा, आई एम गोना ऐड इन हाफ अ कप ऑफ tomato puree and I'm just using plain tomato puree, स्टोर बॉट नहीं है घर के। अब आपने इसको कलर do it. This is what chicken should look like at this point. Keep stirring. I'm spilling everywhere. इसके अंदर I'm gonna add in my chicken stock, which is half a cup of chicken stock। और इसको आप मिक्स करते जाएं, मिक्स करते जाएं until you have the whole stock in it। Now to this I am going to add in my cream। In goes the cream। Actually, this recipe is so nice. Anyone can enjoy it. Anyone can try to make it, and of course, it's not too hard. कोई rocket science नहीं है इसमें। Hi, so my audience is here, and she's going back. So इसको we're gonna mix it once so that the cream has settled. So we're gonna cook this for about 4-5 minutes on low flame। इस पॉइंट पे आप अपनी फ्लेम को कर देंगे। मैं टेस्ट है। सो इसको एक दफ़ा फाइनली मिक्स करते हैं एंड लेट्स सी। अब हमारी सॉस थिक होना शुरू हो रही है एंड इट स्मेल्स हेवनली। के बाद इस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी चिकन। इसको अच्छे से मिक्स करें। ठीक है जी, यम्मी। अब हमने इसको करने देना हो रहा है। आई एम गोना start off by preparing for my garlic rice, which is going to go along with this, and I'm going to see in the next shot। शुरू, ये हमारी आ गई इसी के साथ garlic rice, and now I'm going to add in our Moroccan chicken। तो इसको हम कर देते हैं इसके साथ डिश आउट। प्रेजेंटेशन जो है ये हमारी लग रही है मोरक्कन। सो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। अब माय मोरक्कन चिकन इज रेडी एज यू कैन सी। सो आई एम गोना क्विकली टेक अ बाइट बिकॉज I'm running out of time and I'm starving. I haven't eaten all day long. So now bismillah. So good. I'm telling you, this is the easiest and most delicious recipe you could try out. Make sure to like, share and subscribe this video, and don't forget to press the bell icon right there to get more notifications on my video. And I hope you enjoyed my video. एंड इसी के साथ आई एम गोइंग टू टेक अ लीव फॉर नाउ। एंड अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं एंड यू थिंक दे आर वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग टू वॉच, सो कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल कीप ऑन अपलोडिंग एवरी डे टिल आई कैन। एंड टिल देन, अल्लाह हाफिज़।